Okay, so in there is something very clear to us that we can even hold one or two pills. We should not give. We should not give to the patient. We should not give patient these herbs, or you can say minerals, or you can say homeopathy. No, but you can hold them. You can copy them and give. Convert. If someone asks why you are keeping these pills, you can say I kept it to for conversion of the into the energy remedies, or you can say thought. I just want to convert these into thought forms. You can definitely say don't give because directly that remedy, but you can definitely copy and give. So there is a one disadvantage of having copying. Other than I brought all this for deriving the rates, deriving the vibronics rates. I don't know when I'm going to do it, but as soon as I do for that, now what I did is, see, I have taken my, I'm a very good patient of diabetes. So I have just kept in the one bottle. See, some people are having even the doubt in the copying also. So what I did, I took the same plastic bottle, two plastic bottle, similar to plastic bottle, okay. And in one plastic bottle, I kept these remedies or whatever I got yesterday for converting into the vibronic rate. This will come in next session. Okay. So like that, I have taken the pills into one side, few pills, one on pills I put, and here I put a full pills. And all rest are zero. I doused. Here I doused, you know, just checking which potency will give me the exact replica of the input, whatever I am keeping in the input. I got it as a 3x. And all because maybe I am prejudiced in the electrohomeopathy, they use all 3D, third dilution. So maybe because I am getting that third dilution here, I wanted to copy. So after setting these pills, few pills only, and you people, very much annoyed on me because why he is keeping only small in well, but that itself is very big. In earlier times, we used to have a very small in well so that only sample can be kept there, only very few pills. No need to keep a big anything there because but some people they wanted to copy the yantras. For them, yes, it is difficult. So going forward, we will solve that problem also. Okay. So there and here I put up full bottles of the same quality. It is a white means here also white, plastic means plastic, and I put the pills here, and when I press this button, red light will glow. That infuse button will infuse light will glow, and it will take around the 50 seconds. Within 50 seconds, whatever there in the in well will be transferred into the out well. This is one of the way how we can make the copy energy copy, or even any substance can be converted into a thought form. What we have registered to the government, that we are converting a thought form. We are putting the thoughts of the remedy into the water pills, and these are pills. We are putting the thought of these pills. Okay. We are putting the thought of these pills. Okay. This pills का thought हम इसके अंदर transfer कर रहे हैं. So you can see infused light is on. Infused when light is when goes off. Then there is a important function. First thing is that we are in hurry to remove the that one second, let me switch it off the AI component. Stop AI. Okay. So now light that red light is gone. First lift this from the output. This should be followed the correct sequence. Output, from the output you should remove that and put a cap and write it for what purpose you have done it. And see,
This sample should never be used for ingestion. I mean, for taking inside. Then remove that. After removing, so we can keep that as a write it like these are one pills. You can see there I have put only one pills from all these three. These three bottles I have put only one pills for copying. Okay, so we can write it here. Whatever pills it was there, you can write. You can write it, and you can in future also you can use it as a for sample and making the copies. You can use it for making the copies. So, sir, this is the potentized version, and from this version itself, we can make further samples for the. Yeah, no, this one is a sample. You have to write it as a sample, and what is there in that you have to see. This is a sample. Right. So in this one, what all I have kept, that is mixture number one. This is the Father Muller specific number one. This is another that type of combination. Just I brought because this effectiveness also very nice. Just as we have done the electrohomeopathy and other thing, and this also will add into our library. So one, two, three mixture one and mixture number 16 and 30. I am using it for the very good formula for like see I have taken the Father Muller's these are specific how they are working and what all they are working. I just combined it and made a combination. So to expand the vibronics, as I told you, everything I want to come take under the umbrella of the vibronics. So I am using it here. Next, and what all the functions of this? Let me because it's not coming down. 1 minute. Stop. Okay, let me check. One, please wait 1 minute. Yes, that's because AI component was working. So I do not want the AI component to disturb us. So now, yes, I will now tell you because this is sent as a demo version, demo for this particular model. This is the little advanced than the previous one with a 9 dial. We have 16 dial here because our maximum number is what? Maximum numbers of that biggest number in our numerical mathematica is 7 digit. So 7 into 2, how much? 7 into 2 is 14. Two extra knobs we have. So that we can set like a 7 digit one number and in between 0 and set another number. So we can set two numbers here. But whereas in the madam's the machine, we have got 24 dials. We got 7 so that three different vibration can be set into it. With one gap, it becomes around. We still have one, extra. So only Mother Mary number is 8 digit in our numerical metria medica. Okay, so you understood why there is a additional knobs here, and there's a most the
neglected system in this is the analysis button, analysis and stick pad. But why I was not making a stick pad in my previous models? Because many people, they were thinking that if they are not getting the stick properly, if they are not getting the stick properly, they are assuming that the machine is not working or they are not fit for that particular machine. It is not like that. Stick is an additional, or you can say dowsing faculty. No need of, suppose you are following the Narayani volume 3, they have given everything. The code is given. So let us put one Narayani race and do the demo. Okay, you will take a Narayani volume 3 and yes, paint 10M. Paint 10M, what is the rate? Rate means the numerical code of the 336, 23231. So first make sure that all are set to 0, 2, 3. You have to use the inner dial. Whenever you are using the base 10 and the base the 336, you have to use the inner dial. I will tell you it is set to 336. How to make the base 10 also I will tell you. It is the accuracy, you no need to have. No, I generally don't use any time I never used a base 10. I always use the base 336 with very good result. So 23231, 23231. Make sure just touch them and ensure that all are set to 0. And what is the potency given here? 10M. 10M is the potency here. Set to 10M. In this machine, you don't have any, you can say that based in CEX and the switch, because that it is generally it is used for mentally focusing what potency you want, what scale you want, but there is a equivalent. So here we are having C and X. So the choice is not there. And whenever you are setting for 10M, it will take it as a 10M. 10M and take a glass of water, especially in the silver cup. Keep it here and again press this button. So paint 10M is ready. See, this system is not it is a pharmacy. Means it can make all the energy remedies. But thing is that intelligent brain is required to choose what remedies you want to make. That you have to analyze and dose and do so many type of analysis. Now you are all become very expert how to analyze and all. Yes, it can be done. Okay, then like that, when that light goes off, that is ready. So now it's very important to know, like for example, nutrition 50M. We'll take a nutrition 50M, mixture number 90. Now you want to set the correct potency not according to the potencies given in the book, but you want to make it as per the person's choice. So now it is gone off. Now I let me set that 39576, 39576. You should set it from the top so that you don't get any parallax error. So 39576, we have set to 39576. Then now we want to, that for particular person, for me, what should be the potency? Use a small beaker. So you can take a small beaker like that. These are available in the scientific
instrument shops. So I did very beautifully. It will set here. Never use the samples or blood samples, any sample directly on the machine because it will contaminate. So I have set it now. Now I want to see, this is my nail sample. I wanted to see which potency is suitable. Nutrition, generally Mataji has advised 50 potency. That's fine. But what potency is really this body, this person is requiring? So now, so just go to the 10 potency, slowly rotate. I will for your ease purpose, I am using the other hand and other finger here. Slowly, 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 slowly. See, for me, I'll go once again. Yeah, I'm getting a very good. Can you find even sometime you get a noise also, tuck tuck like a sticking things. So for me, it is working in the CM potency. So then remove this. Means I have put a sample, I have put the remedy, and I'm dosing for the correct potency. Now, as per this, and remove this. No more record because it is set to now put a glass of water and even not water. Now I have already made one remedy in this. Let me put the nutrition also in this only. Okay. Any doubt? This is very easy because many people are having the dial also, and even you can say stick pad also, but you don't know. But it is should not necessary to do it on routine basis. नहीं करना चाहिए. Routine basis 90 see the 50 देना है दे दो. If you are not getting a stick, घबराना नहीं. Not to get worried because that is not mandatory for you being an energy healer. Remedies are there. We have got 14,000 plus rates, and so many rates are still with me. I will share with you whenever I get time. So there are different companies, things are there. Few already I put on the website, so you can see. But how much you want, आपको जितना ज्यादा मिलेगा उतना प्रॉब्लम होगा क्योंकि you will have a confusion. है ना? So best है, always I tell you that you should use volume 3. Start with that because everything is very, very, very easily they are given. See, light is gone. Again, I have infused what I have infused into it. That is the nutrition at the CM potency. Okay, like that. These are the few very important important demo. And another thing is compatibility. Now I want to give like a nutrition I have given here. Nutrition. First, let me find out again, let me keep, this is a very important one. This is a very important as per the radionics practitioner is concerned. Vibronic radionic practitioner concerned. First, put a nail sample, go to that's very important. There is a analysis knob. Whenever you want to analyze the negative energy, that you should start from the zero. Anything you want to analyze from the vitality, positive energy, that time you should bring that knob to 100, assuming that he is 100% all right. He is 100% all right, and let us find out the vitality. So it is called as a general vitality, GV. In all radionics practice, it is called as a GV. This is a very classical instrument. So, and here with because it is a spiritual healing, when you communicate with your spiritual energy, that time only you get a wonderful result. By now, I think so you all have agreed and understood about the spiritual healing system. Now, okay, let me find out my vitality. By that time, again, everything zero.
So slowly I rotate like a center finger. So I'm increasing now 90. It has come to 90. Slowly it is 85. I'm going to again 80. Okay. 75. I'm getting a stick. Okay. You're not getting a stick. Don't worry. Because this is the additional information or additional functioning what we are doing. Okay. But practice and never doubt whatever you get a stick. You say believe it. Okay, that is the only way you have to do. That is now I have got a 75. How can if I add what energy, it will increase. How would we'll do? We'll add first nutrition. Nutrition. What is the nutrition? 39576. 3, 9, 5, 7, and 6. When I just set it this one and the potency 50 m. Okay, 50 m potency, or you can say let us keep it zero because we potency is not very much important, but the material substance geometry is important. Now we are set to the nutrition. Now again come back to by keeping my sample at the input, again come back to 100 and again try to find the next number. See, 3 times only you have to rotate the clockwise. Yes. Around 82, I am getting the stick. That means my vitality is increased by setting this number. My energy level is matched with that energy level. I can bring back to, I can, I can be brought back to 82% vitality. Means it is helping me. Okay. Now I want to add another frequency. Another frequency, which one we will add? We will add the mixture number 63 and check once again how much whether it is helping me or not. So next is what was the this number? Yes, 90. Where it was ending, it was a 76. Okay. 395, 39576. Okay. Now we keep one gap here. After keeping a gap, this is a gap 4, 2, 6, 2, 5. Okay. So backup and the nutrition. Backup also got a wonderful anemia balance, blood sugar balance, glandular pure mixture, osteomyelin, and virus, bacteria, immunity, fantastic. Yeah. So let me see whether is it suitable for me or not. Now again go back to mixture analysis and just slowly do the clockwise rotation 3 times only. See, I'm getting the stick at 90. Means my vitality before adding these two vibrations. Yes, before adding these two vibrations, was 75%. Now again next what we do? Remove this and put these pills back. This back, and so you can say what is the potency, that is 30 potency. And now let us, now in this case
we will douse it again. What is the potency best suitable for nutrition and backup together? Yes, I got a stick at 10 M potency. So keep this, press this. So this time two vibration will come into this. Two vibration. One vibration is the nutrition vibration, another one is the backup. Altogether, we are even found out the how much whether it is suitable or not. And suppose when we added the backup, that time if you are getting the what you call vitality less than the 80%, because originally it was 75%. After setting the nutrition, it has come to 82%. But suddenly, if it is going back to, it can happen like that. When a dissimilar subject items comes to in a one series, it will sometime will not accept it. So that time you should not. It is not compatible. Compatibility is not there. Means nutrition and biochemic for this particular person having the nail sample here. It is not suitable. So likewise you have to declare and make that. Now light has gone. Again, there's a nutrition and backup in these pills we added. So likewise, this is a small demo. And now let us see, there is a digital, no, yeah, another point is when you want to, आपको बनाना ही है, आपने आपका कोई दोस्त बोला कि आपको बेस 10 अच्छा काम करते हैं भाई, हाँ हमको बेस 10 ही चाहिए, बोला ठीक है, then what to do, put this button to base 44, and when they are putting to base 44, if you are using the inner dial, when you are using inner dial, that is base 10. When you are using the inner dial by setting into base 44, that is base 10, because base 10 is base 44 is the improved version of base 10. Likewise, even base 1008 also can be set. 1008, how we get it? I will show you one more things now. That is the final one, how we can use this to the maximum extent. This is the last operation, but very important. So let us bring everything to 0. Now, as I told you, I have put a Father Muller specific number 1, 16 and 30 are there in this. That is useful for diabetes. From the Father Muller's, from their point of view. So now I am using the either analyze button you can use, or the last knobs can be used. Last knob you take it to 10. You ask how many digit for this particular remedy, how many digit can I select as a divine, ये क्या है, divine ideas क्या है, और यू कैन से कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या बोलता है कि कितना डिजिट का ये हम कर सकते हैं. तो एवरीथिंग सेटिंग टू जीरो, इज इट 10 डिवीजन, आई मीन 10 डिजिट, 9 डिजिट, 8 डिजिट, 7 डिजिट, 6 डिजिट, 5 digit, is it 4 digit? See, I got a stick at 4 digit. Matlab only 4 digits are sufficient to program the means the derive the rate of this. Now, what we'll do, we will take the base 336 and 1008. How it is, how can we convert? Why I named it as a 1008? Okay. Those people, they have studied first the geometrical pattern. From geometrical pattern, they have thought of 336. But I being a manufacturer of this, I thought I can make it that 336 can be still can be refined. So now I am telling you now
So we'll start with we have to have a total how many digit. You should keep just like there only, so that it will remind you that you should take the 4 digit. Okay, slowly go to the number one, or you can say slowly, because we are finding out the 1008 rate. So just rotate three times, and keep going forward, and you should get a very prominent stick. I get a stick here, that is 6. Yes, I got. Let it be there, so that I will tell you how to make it write the base. Now we'll take the third one. Okay, I got a stick here, so left it. Now the fourth one. जो हो रहा है उसको भगवान का मर्जी समझना चाहिए. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के यू नेवर से यू आर डूइंग इट. ठीक है, स्टिक आ गया. नाउ how do we no now this number, this particular specific number one, 16 and 30. One is general stomach disorder के लिए ठीक करता है. 16 is works on the kidneys and other thing, and 30 is for 30 is for specifically for, no, he's also say there it is for diabetes. Okay, so now it is ready. Now how to take the reading. If you take the reading from the upper dial by keeping 336, many people will have the confusion here. Please see it once again. The upper dial, what is the thing is, it is you should take the next nearest number, that is 27. I will write it somewhere so that this number is 27. Yes. I will write base 1008. आप कहीं इधर उधर मत ढूंढना. आई विल टेल यू हाउ टू सेट द 1008. 1008 का रेट है, दैट इज 27. 27. What is the next number? 36, 37. 37. What is the next number? 12. And what is the next number? Last number is 17. देखिए, this number is 27, 37, 12, and 17 is the all the combined इसका ये number है. Okay. So now this is how to check the base 336 rate. 336 rate is you have to take the next whole number, like yeah, 6. You can say, you can write just 6. Thank you. You can write 6. 6 is even though the other theory says if we slightest above the 6 we can set it to 7. I don't take that. My consciousness says that it is 6, so I have taken 6.
ठीक है. So next number is, it is 9. ऑलरेडी 8 को क्रॉस हो चुका. सो 9. और ये 3 एंड 4 को क्रॉस हो चुका है. देन यू कैन से टेक इट एज अ 5. हाँ. सो बेस 336 नंबर है 6935. बट एज वी सॉ इन बेस 44 एंड बेस 10 में कितना डिफरेंस है. इसमें इतना, इसमें भी कुछ एरर है. तो उसको क्या करना चाहिए, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए वी मेड बेस 1008. I think so. Someone should get a doubt here. So anybody has a doubt how to set base 1008 in our machine? Means many people have got the not only 10, also they have got a base 44 division. Those people can set base 1008. Yes, sir. Anybody has a doubt how to set the 1008 rate? I think so. It is clear, right? So set the machine into base 336, but use the outer dial. So that time it is base 1008. This the base 1008. I am the first person who has invented in the world. Because it was only up to 336. Then first I made 108. 108 is a holy number. Then I thought people are started asking me 336 है तो बड़ा होना चाहिए. Then I added one more zero. That is 1008. It is more accurate than the 336. And all my rates derived are according to this principle only. This is the best way how you can, so that in circuit रहेगा, because there it has got a scalar coil below. It will communicate your subconscious mind. So whatever the remedy means result we are getting is far accurate than making it in a paper. सर आई Yes. नीड टू आस्क वन थिंग। Yes, sir. जैसे आपने जब हमने सैंपल टेस्ट कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर रहे थे फॉर द वाइटलिटी, आपने नेल सैंपल डाला था इन द हाँ. बीकर, एंड फिर वहां से आपने दोनों मेडिसिन का चेक किया कि हाँ. न्यूट्रिशन और बैकअप से आपका कितना वाइटलिटी बढ़ा उस केस के अंदर, राइट? Correct. Yes. इफ somebody इज नॉट फिजिकली अवेलेबल, जिसका हमारे हम्म. पास सैंपल नहीं है, तो कैन वी पुट हिज फोटोग्राफ और हर फोटोग्राफ और एक वाइट पेपर पे उसका नेम लिख के इनपुट में रख दें, और हम्म. वहां से उसकी वाइटलिटी को चेक कर पाएंगे हम? इज इट पॉसिबल थ्रू 100% दिस? कर पाएंगे. यस, एनी सैंपल. और उससे ओके अच्छा क्या है ना कि मैं माइंड सैंपल ले लो. मेरा ओके, माइंड वो सैंपल नंबर्स, का 5 नंबर्स, टेक्नोलॉजी यूज करिए. वो विल उसको टेक 5 नंबर्स। बोलिए 4 डिजिट का कोई नंबर बोलने के लिए, लेकिन उसका ठीक, मोबाइल नंबर या कोई भी 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए. उसका ठीक है, दिमाग खर्च होना चाहिए उसमें. ठीक है। बोलिए 4 डिजिट का नंबर बोलिए, ऐसा बोलना चाहिए. अगर 1 2 3 4 बोलेगा तो बोला उसका मैं सोचा ही नहीं. वो टाइम पास हम्म, कर सर. बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, बढ़िया वाला दिमाग सोच करके दो, ऐसा बोलना है. ठीक है। देन वो जो बोलेगा उसको लिख करके उसका नाम के साथ इनवेल में रख सकते हैं. दैट टाइम यू कैन मेक द ऑल द सेम एनालिसिस. परफेक्ट। तो जैसे अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, बिकॉज हाँ. बीइंग इट्स अल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर डिवाइस, हम्म. तो अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो इनपुट वेल में हम रख के उसकी पहले कितनी एनर्जी, हम एनर्जी चेक कर सकते हैं। कर एंड सकते हैं. वंस वी गिव द हीलिंग विद, लेट से जैसे नारायणी मिक्सचर में है, सोहम मिक्सचर है हमारा फॉर अपलिफ्टमेंट के लिए भी है, और प्लस नेगेटिव एंटिटी रिमूवल्स भी है, और प्लस यस. सोल क्लिनजिंग भी है। तो हाँ. अगर हम किसी को नेगेटिव एंटिटी रिमूवल में कोड के साथ डालते हैं उसको हाँ. इनपुट वेल में रखकर, तो हाँ. वहां से पहले हम चेक कर सकते हैं कि क्या नेगेटिव एंटिटी रिमूवल इसको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन हर वाइटलिटी। अगर कर रहा परफेक्ट. है तो उसको उसको करेक्ट. वहां से फिर हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर दी पर्टिकुलर थिंग। और फिर यस. जो हम सोल क्लिनजिंग का कोड अगर डालते हैं, तो वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि वाइटलिटी और कितनी इंप्रूव हो रही है। तो दैट मीन्स वी कैन क्रॉस चेक विद द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड द नॉब्स
विद द हेल्प ऑफ स्टिक पैड हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं कि कितना करेक्ट, इंप्रूवमेंट दिख रहा है उस चीज के अंदर, यस, राइट? करेक्ट। राइट, थैंक यू सर, थैंक और बेबी है, ये आपका लास्ट डायल से आप ये भी सोच सकते हो कि मैं कितने मिनट तक दे सकता हूं। आपने फ्रॉम द इधर लास्ट से, डायल, ओके, हाँ, ठीक इसमें है। आप ट्रांसमिट कर दिया। आप लास्ट 0 to 44 डिवीजन है, 44 वन वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिनट। स्लोली स्लोली रोटेट करके आप चेक करिए, करिए कि कितना मिनट में ट्रांसमिट करने से इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। परफेक्ट है, तो दैट मीन्स हाँ, हम अगर किसी को कुछ भी हीलिंग कर रहे हैं तो हम उसको साथ साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं विद स्टिक पैड एनर्जीज की कितना उसमें इंप्रूव करेक्ट। हो रहा है उस चीज के स्टिक अंदर। पैड एनर्जी कर सकते हैं, यू कैन डिटेक्ट ऑल्सो, कंपेटेबिलिटी कर सकते हैं, ये सूट हो रहा है कि नहीं। और आपने खुद का जो भी बनाया नंबर्स है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उससे कितना बढ़ेगा कितना घटेगा पहले ही पता चल सकता है। परफेक्ट है सर, हाँ डन। जी। हाँ, सो एंड ये वंडरफुल थिंग है। सो इसीलिए ये एनालिसिस जो पार्ट है ना, दिस आर नंबर वन टॉप क्लास का रेडियोनिक, सारे प्रैक्टिशनर को ये बेसिक है। लेकिन आप इनिशियली नहीं आता है तो आप चिंता ये करने का। स्टिक पैड मैंने एक आपको ग्रुप के अंदर मैंने आपको दिया था। क्या दिया था ग्रुप के अंदर? हाँ, ग्रुप के अंदर मैंने एक कार्ड का मैंने दिया था आपको, सो दैट इंक्रीज द डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी ऑफ स्टिक पैड, ऐसा करके, है ना? यू रिमेम्बर दैट, नो, इंक्रीज द डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी ऑफ स्टिक पैड करके दिया है। सो दैट यू कैन यूज टू इंक्रीज योर द डाइजेस्टिव कैपेसिटी। ठीक है जी। राइट सर। अब सर इसमें अगर हमें नोसोड अगर हमें क्रिएट करना है तो हम इनपुट वेल में उसका कोई भी ब्लड सैंपल रखेंगे एंड 200 सी पोटेंसी में उसमें डाल देंगे उसको, नहीं राइट? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सैंपल सैंपल जब करनेंगे ना, या ब्लड नसोड़ जो करते हैं, तो हम्म। एक एक छोटा सा ऐसा ब्लैंक आप ले लीजिए, बहुत सारे मिलेंगे होम्योपैथिक शॉप में। ये हम्म। और ऑनलाइन अमेजोन से मैंने मंगवाया, इसको लगा करके ब्लड लेटर होता है ना, इसका जो डायबिटीज का, हम्म। डायबिटीज का एक वो, इसमें थोड़ा इधर आधा तक पानी भरिए, भरने के बाद उसको एक बार टक मारा, उसी का हाथ में ये दे दिया, इसको ऐसा पकड़ो, ऐसा हिलाओ करके, तो जैसे ठीक ये है। हिला दिया, ये पिंकिश हो जाएगा। जो वाटर राइट। जो है वो पिंक हो जाएगा उसको। देन मेक श्योर दैट इट इज नॉट कंटेमिनेटिंग योर मशीन। सो इसमें इनवेल इनवेल में रखने के लिए बोलिए। आउटवेल में आपने पिल्स जो भी है रखिए, उसको पानी रखिए, बेस्ट है। पानी रखिए, ठीक है। 200 पोटेंसी सेट कर दीजिए, एंड दैट बिकम्स द ब्लड नोसोड का ये हो जाएगा। अनदर थिंग, व्हाट देखा, सेकेंड टाइम व्हेन वी टेक द ब्लड टू डू द एनालिसिस। ओके। एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका क्या है, एनर्जी एनालिसिस हम कैसे करेंगे, व्हाट रेमेडी इसको चाहिए, क्या रेमेडी से ये ठीक हो सकता है, कैसे इसको हम एनर्जी लेवल बैलेंस कर सकते हैं, वो देखने के लिए भी। बट उस समय आपको ये नहीं चाहिए। यू कैन कीप द, क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं जनरली, एंड उसके अंदर छोटा सा सेलफोन पेपर के अंदर वो डाल के रखेंगे, दैट विल यू विल कैन यूज इट फॉर द ब्लड एनालिसिस। मतलब राइट सर, एनालिसिस के लिए ब्लड यूज करना अलग है, नोसोड बनाने के लिए यूज करना अलग है। ठीक है। समझ में आ गया सर, हाँ राइट सर, हाँ, समझ गया, right. ये उस वही इंपॉर्टेंट है। जो कभी कभी हम इनिशियली क्या करते हैं, जो हम एनालाइज करना चाहिए वो हम नोसोड बनाने के लिए यूज करते हैं, और वो उल्टा पलटा हो जाता है। नो, ठीक है। सो बनाइए। गॉट इट सर, गॉट। हाँ, एंड अनदर थिंग इज, जो आपका पिल्स बनाया ना, पिल्स कोई रख सकते हैं एज अ आगे सैंपल बनाने के लिए। मिस्टर रमेश ब्लड सैंपल करके लिख करके दो चार पिल्स अपने पास रख लो। सो दैट नेक्स्ट टाइम यू नो नीड टू नो अगेन मेक इट अगेन एंड अगेन, अगेन अब अगेन सर ब्लड जैसे लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अनलेस जो अनटिल देर इज अ ड्रास्टिक चेंज है, या नया प्रॉब्लम आया है, उसको ठीक करने के लिए आप ले रहे, देन ओनली यू कैन टेक दैट। तो दैट मीन्स हमने जो एक बारी हमने जो सैंपल क्रिएट कर दिया, विद दैट सैंपल वी कैन क्रिएट द मल्टीपल सैंपल्स आल्सो विद द सेम पोटेंसी, वो काम करेगा उस चीज के ऊपर, यस राइट? यस यस, एंड बिकॉज देन, हाँ, उसके लिए कोई मैटर करता है कि ये प्लास्टिक बॉटल होना चाहिए या ग्लास बॉटल में भी काम करेगा? बिकॉज इन होम्योपैथिक वी हैव टू बॉटल, वन इज द प्लास्टिक बॉटल एंड अनदर इज द ग्लास बॉटल।
तो अगर हम लिक्विड मेडिसिन कुछ बना रहे हैं, हाँ तो अगर हमने उसको ग्लास बॉटल में डाला है, स्मॉल ग्लास बॉटल जो होम्योपैथिक बॉटल्स आती है 30 ml हाँ की, हाँ तो उससे उससे भी वी कैन इन्फ्यूज टू द मेन अनदर ग्लास ऑफ हाँ, वाटर, दैट विल कर वर्क। सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज जैसे जितना बड़ा होगा ना उतना कॉस्ट ज्यादा होगा, है ना। बॉटल का हम्म। जितना बड़ा 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 लेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट होता है, तो इसलिए ये छोटा वाला बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा। हाँ, राइट। बाय 100 रुपीज में यू विल गेट अराउंड 100 पीसेस। राइट। तो इसको बना के रखने में आसान है, तो इसलिए ये कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट बिकॉज है। इन वेल आउट वेल में सेम होना चाहिए। सेम मटेरियल का आप 1 ड्राम, इसको 1 ड्राम बोलते हैं। 1 ड्राम इज हम्म। अप्रोक्सीमेटली 5 ml। सो राइट। 10 ड्राम, सॉरी 2 ड्राम्स ले ले उसको आप पिल्स बना के आप देने के लिए हेल्प होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं एक ग्लास बॉटल 30 ml का रख रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट वेल में भी 30 ml ही वाटर होना चाहिए उसके अंदर, दिस इज व्हाट द नहीं सेम नहीं, इट शुड ऐसा बी नहीं। इंक्रीज। ओके। यू कैन हैव द, अगर समवे, लेकिन आपको 30 ml का जो बॉटल रखेंगे उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगा। वो अंबर कलर का आता है, प्लेन व्हाइट कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है। अंबर कलर का है, अंबर कलर का है अंबर बॉटल। कलर का है तो उधर भी अंबर रखना पड़ेगा। बट उधर अंबर जो है आपको 450 ml का भी अंबर रख सकते हैं। ओके, बट इट शुड बी सेम कलर, कलर चेंज नहीं होना सेम चाहिए। मटेरियल, सेम मटेरियल। यहाँ पे प्लेन ग्लास है तो उधर भी प्लेन ग्लास, इधर भी अंबर ग्लास है तो उधर भी अंबर, ऐसा। अच्छा, क्या ऐसा होता नहीं है कि कि एक इट इज, साइड, एक साइड। इसका सिंपल है। एक एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला है ना, इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग, इट वैल्यू डजंट चेंज। टू बाई राइट। फोर है, 2/4 का अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट दैट टू रेशियो बाई विल फोर इट नॉट इज चेंज, सेम। दैट प्रॉपर्टी विल राइट। नॉट चेंज। वही वही राइट। हिसाब से इसको चेंज करने में इसी तरह, ऐसे तरह इस तरह से आता है। अच्छा, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं आंबर बॉटल के साथ मैं सिल्वर ग्लास बॉटल के अंदर शिफ्ट कर रहा था, तो दैट विल नॉट वर्क। No, but while making you can make it the amber glass and shift to any glass. नहीं नहीं, once I made the medicine, हाँ and that I put the medicine in the amber 30 ml bottle of homeopathic, हाँ and that from 30 ml bottle I am transferring to the new medicine. So I what I did, in the input well I kept that amber bottle, and in the output well I put the silver bottle, silver नहीं glass. It नहीं will नहीं not जी, work. दोनों दोनों तरफ से सेम The होना same. चाहिए। Right, got ये your point, sir. प्रिंसिपल Got है, it. इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉपिंग। कॉपिंग में Right, यही है correct. कि इफ यू बोथ साइड सो बेटर है। देखिए मैंने तो ऐसा बहुत सारा छोटे छोटा बीकर्स ले लिया है, हार्डली थर्टी Right, थर्टी फाइव 40 रुपीज में आता है फ्रॉम द right, साइंटिफिक। दिस वन, ये छोटा है बड़ा है, मैं इसमें डालूंगा कॉपी करने के लिए, इसमें वो डाल देंगे। लेकिन ये कभी कॉपी करने के लिए, नोसोड बनाने के लिए जब भी आप जो बॉटल लेते हैं उसको डिस्कार्ड करिए, नेवर यूज right. इट अगेन, क्योंकि उसका समझ। पता नहीं क्या उसमें अंदर फॉल्ट रहता है। So let us not contaminate that and his bad energy with our any other energies. गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। थैंक हाँ यू सर। जी ये सर। बहुत अच्छा चीज सिखाती है, मेरे को मिस हो रहा था ये, राइट, ये थैंक यू। ये ना, मैं इसलिए आपको क्यों बुलाता हूँ, इवन दो यू आर ऑल एक्सपर्ट इन दैट, स्टिल मैं आपको बुलाता हूँ ताकि छोटा छोटा कभी कभी इधर उधर का जो डाउट है वो भी क्लियर हो करके यू शुड वर्क मस्त, इसलिए। राइट सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। जी हाँ जी। एंड एनीथिंग एनीबडी? Ami madam, your machine is little bit डिफरेंट दैन दिस। उसका भी जब भी बनेगा 2 दिन 2-3 डेज उसका भी हम क्लास लेंगे। वो बहुत जबरदस्त है, मस्त है। यू कैन इवन ऐड 3 नंबर्स सो दैट यू नो, कार्ड ढूंढते रहना। कार्ड मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कार्ड तो अभी मजा आता है, इजीली लगा सकते हैं। व्हेन यू दैट बिकम्स बल्कि, उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है Yes. ना। ठीक है। Yes. सो Okay, sir. Thank एनी you. एनी डाउट्स? हरमीत मैडम नहीं। प्लीज डाउट। हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है सर जी। सब ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके देन, दिस अ वंडरफुल डेमो, स्मॉल demo, so that start working. So many people still, you are owning a machine but not started working, so that's why। सर जी, ये वाला जो आपका गामा बीटा वाला है, जो 3 कार्ड वाला, वो कैसे यूज करना है वो बताइए आप, उसको उसके यूज ही नहीं कार्ड्स। करना, घर में रख हाँ। लेना ऐसे ही। यो। हाँ हाँ, यूज करके आप तो यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, बट हाँ, स्टिल उसमें पर कोई उसमें नहीं। सर जी अल्फा बीटा एक। गामा, देखिए मैंने हाँ। बहुत बड़ा गलती किया, मैंने अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस किया।
क्यों? बहुत अच्छा है, क्यों किया? अच्छा गलती है तो कुछ फिर नहीं आपको है। यूज करिए, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं। उसके उसके जो कार्ड्स है ना, एक एक है, दूसरा मशीन जो आपने 3 वाला दिया, जिसमें अलग अलग है, वो लोकेशन उसके वो बाद। उसके लिए, हाँ वो लोकेशन वो उसके लिए है, वो अभी हाँ, लेट अस नॉट डिस्कस दैट, वो पहले मैं इसको ओके स्टॉप कर देता हूँ।